आकाश हियर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2020 के मेजर अमेंडमेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स। जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हुआ है वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बेसिकली आप सब जानते हैं करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज योर निर्मला सीतारमण का इस साल का बजट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बजट इन द लास्ट डिकेड। व्हाई? बिकॉज इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट वाज ओनली 5% व्हिच वाज वन ऑफ द लोएस्ट इन द लास्ट 11 इयर्स। उसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन मतलब जो आप खर्चा करते हैं चीजें लेने में, गुड्स लेने में, उसमें भी इट वाज द ग्रोथ रेट वाज ओनली 5.8% व्हिच वाज द लोएस्ट इन 7 इयर्स। इन्वेस्टमेंट वाज 1% जो लास्ट 17 इयर्स में सबसे स्लोएस्ट रहा है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में देयर वाज ओनली अ ग्रोथ रेट ऑफ 2% एंड एग्रीकल्चर में देयर वाज ओनली अ ग्रोथ ऑफ 2.8%। सो ऑल ऑफ दीज निर्मला सीतारमण वाज अंडर ह्यूज प्रेशर कि इस बार का बजट सबसे बेस्ट हो ताकि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है अपने नेशन में वो इंप्रूव हो सके एंड वी कैन कम आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक स्लो डाउन। Now, inflation also shooted up to 7.35% in the last year. Fiscal deficit also was around 3.8%, which is far high than the expected fiscal deficit. Okay, so let us see जो major amendment tax में आया हुआ है उसमें the major amendment is your new simplified personal income tax regime. Now, what is this new simplified personal tax regime? It is very easy. Basically, there have been new tax rate issued by the government and these new tax regime is an optional scheme, mandatory नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप वो scheme adopt कर सकते हो, नहीं चाहिए तो you can always stick to your earlier tax rates. Now, new tax rates देखते हैं तो basically up to 5 lakhs the tax rate will be zero, that is nil, and nil for both new and old. But अगर आपकी income if that is more than 5 lakhs तो उस हिसाब से आपकी इनकम मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख इट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 5% एंड 5% बोथ फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू। 5 lakhs to 7.5 lakhs it will be taxed at the rate of 10% under the new scheme and 20% under the old scheme. So there is a difference of 10%। बहुत सारा टैक्स बचाया जा सकता है 5 lakhs to 7.5 lakhs. Same case goes with your 7.5 lakhs to 10 lakhs जहां पे new scheme में only 15% and old scheme में the same 20%. 10 lakhs के ऊपर अगर आपका इनकम जा रहा है तो 20% under the new scheme and 30% under the old scheme. That is again a difference of 10%. बहुत सारा टैक्स इधर भी बचाया जा सकता है। That is if your income is more than 10 lakhs up to 12 lakh 50 and from 12 lakh 50 to 15 lakhs it is only 25% under the new scheme and 30% under the old scheme. 15 lakhs and above there is no change, that is 30% for old scheme as well as 30% for new scheme. Now let us try to understand कि अगर एक इंडिविजुअल का अगर इनकम 15 lakhs हो तो कितना टैक्स डिफरेंस आ सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विद एन एग्जांपल। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि न्यू टैक्स स्कीम में अराउंड 70 डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस रिमूव कर दिए गए हैं। देयर आर टोटली अराउंड 100 प्लस डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस जिसमें से 70 डिडक्शंस आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें से The ever popular 80C, yes, section 80C भी covered है जहां पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा under new tax regime. Basically, let us understand if your gross total income is say 15 lakhs under both new and old. New में you will have a deduction of 0 rupees, no deduction under 80C, 80D, mediclaim किसी में भी you will not get a deduction. और old scheme में assuming आप 1,50,000 deduction claim कर रहे हैं and assuming just 80C आप utilize कर रहे हैं. So in that case, your net taxable income under new scheme will be around 15 lakhs and old scheme में 13,50,000 after your deduction under section say 80C. Tax on slab rates based on that is up to 2.5 lakhs it is going to be 0 for both old and new scheme. उसके अलावा 2.5 lakh to 5 lakh will be 12,500, that is 5% for new scheme as well as 5% for the old scheme. 5 lakh to 7 lakh 50 will be 10% for the new scheme, that is 25,000 and around 20% for the old scheme, that is a difference of 10% from 5 lakh to 7 lakh 50,000. उसके अलावा more than 7 lakh 50 till 10 lakhs will be having a tax rate of 15% in the new scheme and 20% in the old scheme. So that's a difference of 5% from 7 lakh 50 to 10 lakhs. And from 10 lakhs to 12 lakh 50 it will be 20% under the new scheme and
30% under the old scheme. That is again a difference of around 10% between the new and the old scheme. More than 12 lakh, 50 to 15 lakhs, it is going to be 25% under the new scheme and 30% under the old scheme. That is a 5% of difference between the new scheme and the old scheme, between 12 lakh 50 to 15 lakhs. Now more than 15 lakhs, it will be 30%. That is, there will be no difference between the old as well as the new scheme. Now total tax liability, अगर आपका इनकम 15 लाख है तो it will be coming under around 1,87,500 rupees, and in the old scheme it will be somewhere around 2,17,500 rupees. As you all know, health and education cess जो 4% आता है of the taxable amount, उस पे 4% अगर हम ऐड करेंगे तो it is coming to 7,500 under the new scheme and 8,700 under the old scheme. So finally जो आपका most awaited answer, that is your net tax payable will be 1,95,000 under the new scheme and 2,26,200 under the old scheme. Finally जो total tax saving होगा वो that will be around 31,200 rupees between the new scheme and the old scheme. That is, old scheme will save around 31,200 rupees if your income is somewhere around 15 lakh rupees. So that is all about the new scheme and the old scheme. उसके अलावा there have been major amendments regarding dividend distribution tax. जी हाँ, dividend distribution tax, जब भी a company when it is issuing dividend or paying you dividend, उस dividend पे tax भरना पड़ता है by the company's side. So the company was responsible to pay the dividend distribution tax, but इस साल के बजट पे government has made an amendment, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अभी नहीं भरना पड़ेगा. दैट हैज बीन रिमूव्ड एंड द रिस्पांसिबिलिटी नाउ हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स. नाउ यू हैव टू शो द इनकम. आप अपने इनकम में डिविडेंड जितना भी रिसीव हुआ है उसको ऐड करके अपने स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको उस डिविडेंड पे टैक्स भरना पड़ेगा. नाउ देयर इज नो एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर व्हाटएवर डिविडेंड ही इज रिसीविंग. सो आपको डिविडेंड अपने इनकम पे ऐड करके उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा. ओके, सो अभी हम नेक्स्ट मेजर अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, टैक्स ऑडिट के थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट पे. टैक्स ऑडिट टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 crore to 5 crores फॉर ऑल द बिजनेसेस. दैट इज बेसिकली बिफोर 2020 बजट जो भी बिजनेस 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लेता उसको मैंडेटरी था कि वो टैक्स ऑडिट अंडरगो करे. बट नाउ इट हैज बीन एक्सीडेड और इट हैज बीन increased to 5 crore rupees. But then इधर एक चीज ध्यान रखने का है, only those businesses are covered where 5% of the cash transactions are there. That is, आपका business अगर 95% only through bank transactions के through चल रहा है, in that case alone you can have this tax audit का threshold limit increase, that is around 5 crores का exemption limit. The next major point is your faceless appeals and faceless assessments. ये क्या होता है? बेसिकली इतने सालों से जब भी आपको कोई नोटिस आता था तो आपको पहले चार्ट अकाउंटेंट के पास भागना पड़ता था एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास. बट नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल. फेसलेस अपील्स एंड फेसलेस असेसमेंट्स में सब कुछ घर बैठे बैठे ऑनलाइन से आप नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं एंड सब कुछ क्वेरी जो भी है आपका वो सॉल्व कर सकते हैं. The next amendment है PAN to be instantly allotted on the basis of आधार. आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको PAN लेना बहुत ही आसान होने वाला, because there is no forms to be filled. बस आधार कार्ड के थ्रू you can easily get your PAN number. The next amendment है, there are more than around 4.83 lakh cases pending at various forums, and जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग नोटिस बैलेंस है वो अभी टिल 31st of March 2020 को अपना टैक्स का अमाउंट खाली भरकर दे कैन टोटली सॉल्व द केस. दैट इज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी और व्हाटसोएवर इन दैट केस. एंड ये स्कीम इट इज एक्सटेंडेड टिल जून 2020. दैट इज टिल जून 2020 आप जो अपना नोटिस में टैक्स अमाउंट लायबिलिटी बताया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, ओनली दैट अमाउंट हैज टू बी पेड बिफोर 31st March. बट अगर आप जून तक टाइम लेते हैं तो यू हैव टू पे सम एडिशनल पेमेंट टू बी मेड इन एक्सेस ऑफ टैक्स.
So that was all about the direct tax के amendments in budget 2020. Now let us see GST में क्या क्या reforms हुए हैं in this particular budget. Basically GST में नए returns आने वाला है, new simplified GST returns which even the businessman can file on his own. No need to go to the tax expert or the GST expert to file your GST returns. आप अपने आप ही GST returns online fill कर सकते हैं. ये returns will be coming up from 1st of April 2020. So you have to wait till 1st of April 2020. उसके बाद GST returns का procedure will be very simplified by the government. उसके अलावा GST refund का process they have fully automated and simplified. So that is all about the major amendments in the tax reforms by budget 2020. So that's it from my side today. Thank you guys. See you next time. Until then, bye bye.